So yesterday we was discussing about this pharmacognosy. Am I audible? Let me know once last time. Audible, I am. Okay. So in the yesterday's session we were seeing this pharmacognosy, metabolic pathways in the pharmacognosy. So metabolism of your plants, how plants will synthesize the primary metabolites and secondary metabolites, and what are the different biogenetic pathways. So there are different biogenetic pathways, like there is a synthesis of secondary metabolites in the plant, and secondary metabolites, they are very much important for us because they have certain kind of physiological action. So for example, tropin alkaloids from tropin alkaloids from belladonna, as well as uh, datura strontium, and as well as hyoscyamus. So tropin alkaloids from these plants, they are having anticholinergic properties. So caffeine, theophylline, cocaine cocaine from coca, that is also tropin alkaloid, and that is a seen stimulant efferent action. The caffeine from your coffee, or theophylline from tea, theobroma. So that is a seen stimulant or analeptic. A glycoside obtained from digitalis, that is a digoxin, digitoxin. They are the cardiotonic in case of congestive cardiac failure. तो congestive cardiac failure में उनका यूज होगा. Atropine alkaloids, उनका यूज कहाँ पे होगा? So they are anticholinergics, tropin alkaloids. So in the similar way, vinca alkaloids are anti-cancer in nature. All these are nothing but the secondary metabolites. So for that you should understand what do you mean by primary metabolites and what do you mean by secondary metabolites. So your plant produces the two kind of metabolites. Plant will have metabolism and they will produce different kind of metabolites. So first we'll understand that. So metabolic pathways in the higher plant and their determination. So every living being, like you, me, as well as the some animal, all animals, likewise that जैसे मुझको लगता है खाने के लिए, जैसे मुझको लगता है मेटाबॉलिज्म, मुझ में भी मेटाबॉलिज्म होता है, आप में भी होता है, वैसे ही जानवरों में भी होता है, प्लांट में भी होता है. So all living beings, they need a various number of organic molecules for their survival purpose, like for respiration or formation of building blocks. Okay, so you know that protein is a polymer, and for building block of protein you need a amino acid. So for the respiration, formation of building block, for the production, for example in the plants, so alkaloids, they act as a protective agent. So you will ask question how. So alkaloids, they are bitter in taste, and some alkaloids, they are toxic in nature. For example, atropine is also toxic. Suppose you are taking any tubercular alkaloids, so it is a paralyzing agent. So likewise that, so while herbivorous animals, herbivorous insects, when they try to eat that plant, so plant produces some chemicals which prevents them by eating by animals. तो पत्तों में ये अल्कलॉइड्स होते हैं, स्टीम में रहेंगे, तो जैसे जानवर ये खा लेंगे वो मर जाएगा, जैसे इंसेक्ट वो खा लेंगे मर जाएगा. So for the protective purpose also, carbohydrate, proteins, lipids, nucleic acids, so all they are known as a primary metabolites, because for the synthesis of these molecule, or for the synthesis of carbohydrate, lipid, proteins, so there is a chain of reaction which occurs in the plants as well as every animal. So that kind of reactions, they are known as a, okay, that kind of reaction, they are known as a metabolic pathways. So series of reaction for the synthesis of your carbohydrate, lipid, proteins, nucleic acid, and some other compounds. Other compound we will discuss. So though all organisms, they are very much different in the nature, but their metabolic pathway for the synthesis of biomolecules, for the synthesis of biomolecules, the metabolic pathway, it is very common. Okay. Metabolic pathway which is utilized for the synthesis of biomolecules like carbohydrate, okay, carbohydrate, protein, lipids. These biomolecules, they are synthesized in the same metabolic pathway or in the similar fashion in the animals as well as in the plants. Okay, so that's why these metabolic pathways, they are known as a primary metabolism or primary metabolic pathway, and the product obtained in the that metabolism, that is the carbohydrate, protein, lipids, nucleic acid. So they are known as the primary metabolites. Okay, they are known as the primary metabolites. We have seen this. Now, apart from these substances, plant also produces certain other compounds.
which have a less distribution in the nature. They are less distributed. See, for example, alkaloids, glycoside, tannin, terpenoids. So they are called as a secondary metabolite, and their metabolism is nothing but secondary metabolism. Those chemicals or those organic compounds which are synthesized by plant, and they are not important for their living, okay, but they are serving other function. They have other function, they serve as a other function, like your production is there, like storage house is there, storage form of nitrogen. For example, plant में अगर नाइट्रोजन का स्टोरेज फॉर्म कौन सा है, there is alkaloid. So alkaloid is the storage form in the plant, storage form for the nitrogen in the plant, okay? Likewise that. So glycoside is a storage form of sugar also, so rare sugars. So some secondary metabolites, they have obvious reason for their production. For example, defense mechanism or pollination by insect. They are the secondary metabolite. The product is known as a secondary metabolites. For example, alkaloids, glycoside, terpenoids, tannins, alkaloids, all they are known as a secondary metabolites. Okay, and they have vast pharmacological activity. They have certain physiological action. They have certain pharmacological activity. So that's why we are interested in the secondary metabolites. We are not interested in the primary metabolites. So metabolism is classified. Metabolism is composed of two parts. Anabolism is there is a energy utilization is there, and catabolism in which there is a energy expense. So anabolism is synthetic reaction, mostly synthetic reaction जिसमें कोई synthesis हो रहा है. तो synthesis जब हो रहा है तो उसमें energy लग जाएगा. So anabolic reactions mostly they are of a synthetic in nature. Okay, so energy is used in this reaction. Catabolism is there is a energy expense, so there is a energy is produced in the catabolism, okay, energy yielding phase. So in the plants, carbohydrate they are synthesized in the plant. They synthesize their own carbohydrate by using carbon dioxide and water and sunlight. Carbon dioxide, water use करके sunlight के use करके they will produce a carbohydrate by the photosynthesis, right? Now the carbohydrate, they produce the carbohydrate by photosynthesis involving the pentose phosphate pathway. तो carbohydrate अगर एक बार plant में carbohydrate बन गए by using photosynthesis, so that carbohydrate can be utilized for production of different intermediate. Carbohydrate का क्या क्या हो सकता है, carbohydrate का क्या क्या हो सकता है, ठीक है? So what is the different fate of carbohydrate? Now that carbohydrate is converted into pyruvic acid. You know that it is nothing but the pyruvic acid is nothing but the product of your glycolysis. Pyruvic acid is nothing but the product of your glycolysis. From the pyruvate act as a central molecule, and from the pyruvate there are different intermediate that can be formed in the plant. What are these intermediate? From the pyruvic acid, you know that oxidation of this glucose molecule. Lastly, you will get acetyl CoA. Okay. From the acetyl CoA, you plant utilizes this acetyl CoA for the synthesis of lipids. Fatty acids, they are synthesized from the acetyl CoA involving the acetate malonate pathway. Okay. Acetate malonate pathway utilize okay, fatty acid बनता है. Okay. Now again this acetyl CoA is utilized by plant for the formation of polyketides. Polyketides or propanoids, you can say, or aromatic compounds. Polyketides, aromatic compounds, they are synthesized from acetyl CoA. Again, acetyl CoA is converted into terpenes or terpenoids involving the acetate malonate pathway. Again, you know the carbohydrate undergo glycolysis and it can get aromatic compound. You can plant will get aromatic compounds from this also. And that aromatic compounds after transamination and removal of ammonia, you will get amino acids. And you know that amino acids are the building block for proteins. Amino acid एक बार बन गए तो protein बन जाएगा. And amino acids are also precursor for synthesis of alkaloids. True alkaloids, pseudo alkaloids, true alkaloids, proto alkaloids. They are biosynthesized from amino acids, and from amino acid nucleic acid can be synthesized. So this is the overall process of
metabolism, secondary of with production of primary and secondary metabolites in the plant. Now, Shikimic acid pathway I would like to revise. Shikimic acid pathway. Okay. First, we'll see this. So, Shikimic acid pathway means what? This pathway involves the production of shikimic acid. So, इसमें क्या होता है कि shikimic acid बनता है. Shikimic acid का significance क्यों है इतना? क्योंकि वो shikimic acid से बहुत सारे 2-3 एसिड बनते हैं. Shikimic acid से प्रीफेनेमिक एसिड बनता है. Shikimic acid से कोरिज्मिक एसिड बनता है. कोरिज्मिक एसिड से एक ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड बनता है. ठीक है. और आपका जो प्रीफेनेमिक एसिड है उससे फिनाइलअलानाइन नाम का अमीनो एसिड बनता है. उससे आपका टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड बनता है. और वो अमीनो एसिड बाद में यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोलॉइड्स और बाकी जो भी है अल्कोलॉइड ग्लाइकोसाइड्स वगैरह. नाउ ओके, सो दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज नोन एज सिक्किमिक एसिड पाथवे बिकॉज इसमें सिक्किमिक एसिड बनता है. कैसे बनता है? सो इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट, this is carbohydrate and phosphoenol pyruvate which is intermediate from the glycolysis. So they gets condensed. इसका क्या होता है? कंडेंसेशन होता है. बनता है आपका 3-deoxy D-arabino F2 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 sonic acid 7 phosphate बोलते हैं DAHP 3-deoxy arabino F2 sulfonic acid 7 phosphate. So and from that 3-dehydroquinic acid or 3-dehydroquinate enzyme is there. Now this DAHP is synthesized by DAHP synthetase enzyme. Okay? And from DAHP 3-dehydroquinic acid or 3-dehydroquinate is there by 3-dehydroquinate synthetase. And after that from this 3-dehydroquinic acid you are going to get a 3-dehydroshikimic acid. 3-dehydroshikimic acid. Okay, and from that quinic acid 3-dehydroquinate or quinic acid you are going to get a quinic acid also. Quinic acid is also one of the secondary metabolite. It is used for the production of another type of secondary metabolite. Now from this 3-dehydroshikimic acid you are going to get shikimic acid. तो shikimic acid से उसका phosphorylation होता है shikimic acid का. There is a phosphorylation of shikimic acid and 3-enoyl pyruvyl shikimic acid 5-phosphate is the product. Okay, and this 3-enoyl shikimic acid 5-phosphate is converted into corismic acid. यहाँ पे corismic acid बनेगा आपका. And this corismic acid from this corismic acid so anthranilic acid is synthesized. Okay, corismic acid से anthranilic acid बनेगा. कैसे बनेगा? यहाँ पे ये पूरा फंक्शन को रिमूव हो जाएगा, अमोनिया यहाँ पे आ जाएगा. तो एंथ्रेनिलिक से एसिड से बाद में आपको बनेगा ट्रिप्टोफैन, नीचे जाकर ट्रिप्टोफैन बनता है. फ्रॉम द कोरिज्मिक एसिड ओनली सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रीफेनेमिक एसिड. फ्रॉम दैट प्रीफेनिक एसिड सो phenyl pyruvic acid is there, formation of phenyl pyruvic acid is there, and 4-hydroxy phenyl pyruvic acid is there. So phenyl pyruvic acid is converted into phenylalanine, 4-hydroxy phenyl pyruvic acid is converted to tryptophan. You can see over here. So that's why in this pathway there is a production of aromatic amino acids. Question इसके ऊपर आ चुका है कि phenylalanine, tyrosine, tryptophan, these are the amino acid which are intermediate or it is formed in the following metabolic pathway in the plant. So shikimic acid pathway involves the production of these aromatic amino acids. Tryptophan, phenylalanine is the aromatic one, tyrosine is the aromatic amino acid. Okay. So production of aromatic amino acid that takes place in the shikimic acid pathway. Again production of this corismic acid, then shikimic acid and this prepinamic acid. 3 kind of acids they are also produced in the shikimic acid pathway. तो यहाँ पे shikimic acid pathway में ये important है आपका क्या क्या बनता है shikimic acid pathway. shikimic acid pathway में बनता है आपका 3 एसिड. कौन सा? पहला तो होता है आपका shikimic acid, दूसरा होता है आपका corismic acid, तीसरा होता है prefenamic acid हो गए. और इसमें क्या बनता है? और उसमें बनता है अमीनो एसिड्स. कौन से? फिनाइलअलानाइन, ठीक है, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. तीनों अमीनो एसिड्स उसमें बनेंगे. और these 3 amino acids they are known as aromatic amino acids: phenylalanine, tyrosine, tryptophan. So it is the pathway
by which plant will get a aromatic amino acid. Plant will synthesize aromatic amino acid, and that aromatic amino acid can be utilized for the synthesis of another like for example from phenylalanine you are going to get a ephedrine. Okay, from phenylalanine you are going to get ephedrine. From tyrosine you are going to get that alkaloids. Okay, from tryptophan you are going to get indole alkaloids. From tryptophan you are going to get indole alkaloids. So that's why this Shikimic acid pathway in the plants is very important. Okay, remember these three acids and these amino acids which are found in the Shikimic acid pathway. Now इसका reactions क्या होते हैं Shikimic acid pathway. So initially erythrose 4-phosphate and phosphoenol pyruvate will condense together to form a this DAPH. Okay, DAPH. So okay, 2-keto-3-deoxy 7-phosphoeptogluconic acid. Okay. It is catalyzed by DAPH synthase. Now after that, trihydroquinate enzyme will synthesize the 3-dehydroquinate from the this 2-keto-3-deoxy phosphoglucoheptonic acid. Okay. Then after that इसमें क्या है NAD लगता है nicotinamide adenine diphosphate is used as a cofactor for this reaction. Now in this in presence of another enzyme एक और एक enzyme मतलब 3-dehydroquinate dehydratase. Okay, remove. Okay, the DHQ removes the water and forms a 3-dehydroshikimic acid. यहाँ पे 3-dehydroquinate जो बना है उससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपको बनेगा 3-dehydroshikimic acid. नाउ ADP बेस्ड फॉस्फोरिलेशन इसका फॉस्फोरिलेशन होगा मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा. So ADP based phosphorylation occurs of the product that is dehydroshikimic acid and forms a shikimate 3 phosphate or shikimic acid 3 phosphate simply in presence of an enzyme known as shikimate kinase. The reactions of again. Now after that phosphoenol pyruvate will react with the shikimate 7 phosphate to form a biovinyl pyruvyl shikimate 3 phosphate which helps in the with the help of enzyme known as biovinyl pyruvyl shikimate 3 phosphate synthase EPSP. उसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा आपका कोरिजमेट. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट कोरिजमेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट कौन सा ये है ना. सो प्रोडक्ट 5-इनॉइल पायरुव्यल शिकमेट 3 फॉस्फेट वाया एंजाइम कोरिजमेट सिंथेटेज. इसका जो कोरिजमेट सिंथेटेज है वो 5-इनॉइल पायरुव्यल शिकमेट 3 फॉस्फेट को कोरिजमिक एसिड में बना देगा. उसके बाद में क्लेजन रीअरेंजमेंट that occurs with the corismate in presence of corismate mutase नाम का एंजाइम क्या करेगा कोरिजमेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें प्रीफेनेमिक एसिड. ठीक है, प्रीफेनिक एसिड में कोरिजमेट म्यूटेज कन्वर्ट करेगा. ठीक है, बाद में फ्रॉम कोरिजमिक एसिड वेरियस इंटरमीडिएट दे आर फॉर्म्ड लाइक एंथ्रेलिक एसिड phosphoribosylate एंथ्रेलिक एसिड. and lastly they will produce a tryptophan from prephenic acid which is converted into phenyl pyruvic acid or 5-hydroxyphenyl pyruvic acid and they will respectively give you either phenylalanine and tyrosine. Okay, तो pyruvic acid क्या देगा phenylalanine, 4-hydroxypyruvic acid क्या देगा tryptophan. Okay, so we have seen this. What is the importance of this Shikimic acid pathway? So it is very important pathway for production of phenyl propanoids in the plant. Phenyl propanoids like phenylalanine, tyrosine. The main precursor for the synthesis of coumarin, lignin, tannins, flavonoids. ये सब क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. coumarin, lignin, tannins, flavonoids है ना. coumarin कहाँ से आता है? coumarin is having anticoagulant effect. मैंने जब एंटीकोगुलेंट पढ़ाया था आपको उस टाइम पे बोला था क्लोवर लीफ ग्रास होता है, स्वीट क्लोवर लीफ ग्रास. उसमें क्या होता है coumarin डेरिवेटिव वो जानवर ने खा लिया तो उनको क्या हुआ ब्लीडिंग डिसऑर्डर. तो वहाँ से वो एक्सीडेंटली coumarin एंटीकोगुलेंट डाइकॉमर वालों को उनका फाइंडिंग्स हुआ है. ठीक है. नाउ गैलिक एसिड इज आल्सो बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम शिकमिक एसिड एंड पाथवे शिकमिक एसिड पाथवे देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ 3-dihydro shikimate in presence of enzyme shikimate dehydrogenase. aromatic metabolite and alkaloids are formed by this cycle. तो शिकमिक एसिड पाथवे शॉर्ट में यहाँ पे शिकमिक एसिड बनेगा कोरिजमिक एसिड, उससे बनेगा प्रीफेनिक एसिड,
पिपेनिक एसिड से फिनाइलएलानाइन और फ्लेवोनॉइड्स बनेंगे। इसमें पिपेनिक एसिड से टायरोसिन बनेगा, टायरोसिन से अल्कोहलाइड बनेंगे। ट्री फेनिक एसिड से फिनाइलएलानाइन बनेगा, उससे अल्कोहलाइड बनेगा। फिनाइल C3 कंपोनेंट मतलब फिनाइल प्रोपेनाइड यूनिट बोलते हैं उसको। फिनाइल C3 कंपोनेंट और फिनाइल 3C कंपाउंड्स और फिनाइल प्रोपेनेट, फिनाइल प्रोपेनाइड्स। So from that cinnamic acid and phenyl C1 compounds are there. They are synthesized the plants. इसका पूरा एक समरी यहाँ पे और एक बार। शिकमिक एसिड से बनेगा क्लोरोजेनिक एसिड। क्लोरोजेनिक एसिड itself is a secondary metabolite. In शिकमिक एसिड से बनेगा कोरिज्मिक एसिड। कोरिज्मिक एसिड से बनेगा एंथ्रेलिक एसिड। एंथ्रेलिक एसिड से बनता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से ये बनेगा इंडोल ग्लूकोज आइसो ग्लूकोज इनोलेट्स, इंडोल phytoalexin, tryptamine, indole and quinoline alkaloids. तो tryptophan से quinoline alkaloid बनता है। आपको क्वेश्चन आता है बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर अमीनो एसिड फॉर इंडोल alkaloids और बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर अमीनो एसिड फॉर cinchona alkaloid, sorry, for the vinca alkaloids. So it is a tryptophan. Vinca alkaloids they are biosynthesized from tryptophan. Okay, quinolone alkaloids. They are also biosynthesized from tryptophan. Okay, the indoleacetic acid also. कोरिज्मिक एसिड से बनता है आपका फिनाइलएलानाइन एंड फिनाइलएलानाइन इज अ प्रिकर्सर फॉर फिनाइलएथालामाइन। देन सिनेमिक एसिड से फ्लेवोनॉइड्स बनते हैं, एंथोसायनिन बनते हैं, लिग्निन बनते हैं, कौमेरिन, फाइटोएलेक्सिन, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड से भी क्या बनते हैं, कैटेचोल न्यूक्लियस बनता है, टैनिन्स बनते हैं, सैलिजिनिन बनते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट, हाइड्रोक्सी एसिड, ये सब बनता है। उसके बाद में फिनाइलएलानाइन से आपका आइसोक्विनोलिन एंड बेंजिल आइसोक्विनोलिन टाइप ऑफ अल्कोहॉल्स। तो बेंजिल आइसोक्विनोलिन टाइप ऑफ अल्कोहल कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट इन द ओपियम में होता है, पापावेरिन बेंजिल आइसोक्विनोलिन टाइप ऑफ अल्कोहल। टायरोसिन, अगेन टायरोसिन इज आल्सो अमीनो एसिड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द चिकमिक एसिड। टायरोसिन से क्या बनता है, अल्कोहलाइड्स बनेंगे, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड बनेंगे, बीटा लेंट बनेंगे, मॉर्फिन बनेगा, टायरामाइन बनेगा, टायरामाइन से ऑर्डेनिन अल्कोहलाइड बनेगा। तो शिकमिक एसिड पाथवे लीडिंग टू बायोसिंथेसिस ऑफ डाइवर्स बायोएक्टिव प्रिंसिपल्स, डाइवर्स बायोएक्टिव प्रिंसिपल्स। बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, एम आई ऑडिबल टू यू, आर यू गेटिंग, समझ रहा है आपको? सो बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, they are the phenyl propanoid units containing compound and they are an antioxidant. That's why flavonoids they are very very important. As they are antioxidant, their potential use in a cancer is also there. Flavonoids को कैंसर में भी यूज करेंगे as they are antioxidant, they prevent. Flavonoids are biosynthesized by condensation of shikimic acid and acyl polymalonate pathway. The phenyl propane, that is a cinnamic acid derivative, they are synthesized from shikimic acid which act as a precursor for polyketatide. हमने देखा है इन द दिस स्कीम क्या होता है इसमें, सो 3 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, 3 एसिटेट रेसिड्यू, दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ स्ट्रक्चर फॉलोड बाय रिंग क्लोजर। तीनों का कंडेंसेशन होगा 3 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का, बाद में रिंग क्लोजर, तो इससे बनेगा फिनाइल प्रोपेन और उससे फिनाइल प्रोपेनाइड बनती है, बाद में एक पॉलीकेटाइड बनेगा, बाद में चाल्कोन माइटी बनेगा एंड फ्लेवोनाइड। All flavonoids they have most of the flavonoids they have like this moiety, chalcone moiety. So biosynthesis of flavonoids, biosynthesis of glycosides, glycoside कैसे बनेंगे, the metabolic process of glycoside product, glycoside में क्या होता है, दो पार्ट होता है, ठीक है। पहला पार्ट होता है ए ग्लाइकोन, इसको मैं ए लिखता हूँ, दूसरा पार्ट होता है ग्लाइकोन, ग्लाइकोन मतलब जी लिखता हूँ। ग्लाइकोन इज अ शुगर पोर्शन, ए ग्लाइकोन इज अ नॉन शुगर पोर्शन। A glycan part is separately synthesized in the plant. A glycan part जो होता है वो separately बनता है, जैसे chimic acid पाथवे में बनेगा आपका A glycan part, okay? And glycan part मतलब sugar part. There is a bond formation between glycan and A glycan, so known as a glycosidic bond. Known as a glycosidic bond. Now, if in that bond oxygen is there, known as a O glycoside. If in that bond carbon is there, known as C glycoside. If there is a nitrogen, known as a N glycoside. If there is sulfur, known as ES glycoside. Okay? So metabolic process of glycoside formation occurs in a 2 step. In the first step, various type of A glycans are formed.
by biosynthetic reaction. पहला A glycone बनेगा. In the second step there is a coupling of A glycone part with the sugar moiety. तो पहले इसमें A glycone part जो है वो separately synthesize होगा, बाद में A glycone glycone का coupling हो जाए. In different types of glycosides, the interaction of nucleotide glycoside occurs between UDP glucose with the alcoholic or either phenolic group of secondary compound known as A glycone. A glycone वाला जो पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ एक तो A glycone वाले पार्ट में एक तो अल्कोहलिक ग्रुप होगा या फिर फेनोलिक ग्रुप होगा एंड जो शुगर बना है प्लांट में whatever carbohydrate is there, so there is a activation of that sugar by uridyl transferase. So UTP group will be added to the sugar, and now that sugar is activated, and now A glycone and that UDP sugar, so will transfer sugar to A glycone molecule. Now these occurs in the two step as I told you. First, in the first step, uridyl triphosphate transferred to uridyl group to a sugar. Uridyl triphosphate जो होता है UTP plus sugar phosphate. So uridyl transferase enzyme will catalyze the transfer of this uridyl triphosphate to a sugar and remaining the phosphate group intact. UDP sugar बन जाएगा, sugar रहेगा. The second step, transfer of sugar moiety from UDP to the stable acceptor, that is a glycone part. देखो यहाँ पे UDP sugar A glycone part बनेगा आपका glycoside. The reaction is catalyzed by glucosyl transferase and forms a glycoside. Now, if there is a bond formation, in the bond is known as a glycosidic bond, and if in that bond oxygen is there, O glycoside is there, known as O glycoside. If carbon is involved, known as a C glycoside. If nitrogen is there, N glycoside. Sulfur co is glycoside. Okay. Biosynthesis of glycosides. So there are different glycosides like anthraquinone glycosides, then cardiac glycosides, saponin glycosides, saponin, triaterpenoid glycoside, aldehyde glycoside, like that. Okay. We are going to see it one by one. Sugars of glycosides are monosaccharide like rhamnose, glucose, fructose, or there might be deoxysugar like digitoxose and cymarose. A glycone moiety of cardiac glycoside में जो A glycone part जो होता है वो steroidal in nature है. It is cyclopentanone or hydropenanthine ring होता है उसमें. Okay, cyclopentanone or hydropenanthine. Derivative of cyclopentanone or hydropenanthine ring which contains unsaturated lactone at a 17th position. जो 17 नंबर का ऊपर वाला कार्बन होता है वो रिंग 4 के ऊपर. So that consists of ketone group. That's why it is known as lactone. 7. Okay. Lastly, 5-membered ring with a ketone known as a lactone. A 14 alpha hydroxyl group at a and इसमें 14 alpha hydroxyl group भी होता है 14 कार्बन के ऊपर and C structure of ring C and D. Cardiac glycoside में. Secondary metabolite obtained by cholesterol metabolism. Cholesterol का metabolism होके कौन से alkaloid कौन से secondary metabolite बनते हैं. So सबसे पहले तो acetyl CoA will be utilized for the synthesis of squalene. सबसे पहले squalene बनेगा, उसके भी steps होते हैं. We'll see in upcoming slides also. So acetyl CoA से बनता है squalene. Squalene से बनेगा cholesterol. Squalene is converted to cholesterol. Now cholesterol is that is 2022 dihydrocholesterol. That okay. So from cholesterol से क्या बनेगा? From the cholesterol itself, diogenin, yamogenin, okay. From diogenin you are going to get thiagogenin. Yamogenin से बनेगा sapogenin. Cholesterol activated, that is 2022 dihydrocholesterol. उससे उसमें अगर और दो कार्बन ऐड करेंगे, so addition of C2. So from 2022 dihydrocholesterol you are going to get this pregnenolone. So from pregnenolone उसमें अगर दो कार्बन ऐड किया, so 2 pregnenolone plus 2 carbon atom, you are going to get these are glycosides. Digitoxygenin, decoxygenin, stropanthelin. And if there is addition of 3 carbon atom in the pregnenolone, so you are going to get these glycosides: silariin, glucosidine,
देन हेलेब्रूजिनिन। सो ये तो ग्लाइकोसाइड के बारे में होगा। नेक्स्ट क्या है, एसिटेट पाथवे। नेक्स्ट इज नथिंग बट द एसिटेट पाथवे। ओके, नाउ एसिटेट पाथवे इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। फैटी एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्लांट बाय फॉलोइंग पाथवे। ठीक है, ये मेटाबॉलिक पाथवे भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर। जैसे मैंने बोला है कि वहाँ पे शिकिमिक एसिड के पाथवे के ऊपर क्वेश्चन था कि aromatic amino acids are synthesized by plants in which of the following pathway? So शिकिमिक एसिड, तो तीन एसिड बनता है। कौन सा? शिकिमिक एसिड, पेप्रिनिक एसिड एंड कोरिज्मिक एसिड। वो उसका भी क्वेश्चन आ चुका है। एंड और एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन पाथवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द प्लांट, शिकिमिक एसिड। Now, second pathway, acetate pathway. So, from that pathway, fatty acids they are biosynthesized by plants. So, acetate pathway is important in the formation of various phytoconstituents like fatty acid, polyketides, prostaglandins, alpha toxin, tetracyclines, and other important phytoconstituents. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। For the biosynthesis of fatty acid, acetyl CoA is carboxylated. Acetyl CoA is carboxylated to form a malonyl CoA in presence of enzyme known as a acetyl CoA carboxylase. ठीक है, acetyl CoA का और एक carboxylation होगा by the enzyme acetyl CoA carboxylase. The energy required for the carboxylation, energy लगता है इस reaction के लिए, that is supplied in the form of ATP and loss of carbon dioxide occurs. This step, in after this step there is a reduction, there is a dehydration, and again there is a reduction. Okay. So during both reaction, okay, during the both reduction process, during the both reduction process, दो बार reduction हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। Electrons are provided by NADH plus and H plus. Formation of butyryl ALP होगा। तो पहली बार एसिटिल को है, उसमें और एक कार्बोक्सिलेशन होगा, ओके, और उसमें और एक कार्बोक्सिलेशन होगा, तो बनेगा आपका ब्यूटारिल, है ना, ALP, असाइल फॉस्फेट, ब्यूटारिल असाइल फॉस्फेट। द कपलिंग बिटवीन मेलोनिल असाइल ACP and butyryl ACP, मेलोनिल असाइल फॉस्फेट एंड ब्यूटारिल असाइल फॉस्फेट। तो ये जब कंडेंसेशन होगा, सो देयर इज ओके coupling or condensation between malonyl ACP butyryl ACP occurs and their reduction is repeated again and again. तो malonyl ACP और butyryl ACP वो दोनों को condensation होगा, उसके बाद में reduction होगा again and again, and lastly you are going to get one fatty acid. Okay, malonyl CoA binds again with the fatty acid residue and increases the chain of two carbon atom in it, and the end product of this is nothing but the palmitic acid, which is a 16 carbon containing acid. Fatty acids they are synthesized or they are biosynthesized in the plant by acetate pathway. देखो साइट्रिक एसिड साइकिल जो होता है, क्रेब्स साइकिल, उससे बनेगा आपका एसिटेट, एसिड से बनेगा एसिटिल कोए, उसके बाद में उसका कार्बोक्सिलेशन होगा और बाद में बनेगा मेलानिल कोए, और इसमें और एक होगा तो ब्यूटारिल कोए बनेगा। इसमें और एक एसिड ऐड होगा तो ब्यूटारिल कोए। तो मेलानिल कोए प्लस ब्यूटारिल कोए ये कंडेंस होके रिडक्शन होके रिपीटेडली कंडेंसेशन एंड रिडक्शन इज देयर, so there to form a fatty acid, or to form a fatty acid like this. For example, malonyl ACP and butyryl ACP will form a hexanyl मतलब 6 carbon containing side chain fatty acid है। malonyl ACP plus hexanoyl ACP, ये 6 वाला प्लस ये malonyl मतलब 2 बनेगा 8 octanoyl ACP, malonyl plus octanoyl decanoyl बनेगा, वैसे डेकेनोइल ACP प्लस मेलानिल डिओडेकेनाइल प्लस मेलानिल टेट्राडेकेनाइल बनेगा, और मेलानिल प्लस टेट्राडेकेनाइल हेक्साडेकेनाइल मतलब ये 16 कार्बन वाला होगा। हेक्साडेकेनाइल मतलब हेक्सा मतलब 6, डेका मतलब 10, सो इट इज अ 16 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। ये बाद में फैटी एसिड बन जाएगा। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, पायरुवेट decarboxylase will convert pyruvate to acetaldehyde. Acetaldehyde dehydrogenase will convert to acetaldehyde to acetate, and acetate is converted into acetyl CoA synthesis into acyl CoA. Acyl CoA कैसे बनेगा?
जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ओके, पायरुवेट decarboxylase will convert pyruvate into acetaldehyde. Acetaldehyde is converted into acetate by enzyme this acetaldehyde dehydrogenase. Acetyl-CoA is synthesized from acetate by enzyme acetyl-CoA synthesis, एंड acetyl-CoA से बनेगा बाद में फैटी एसिड। तो ये acetaldehyde जो बना है उसको अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस से इथेनॉल बनता है उससे, एंड दैट्स रिवर्सिबल प्रोसेस। उससे इथेनॉल बनेगा या इथेनॉल से acetaldehyde भी बनता है, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, यू कैन सी ओवर हियर फॉर्मेशन ऑफ स्क्वेलिन। ओके, स्क्वेलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो acetyl-CoA, this is known as acetyl-CoA, इसके ऊपर GPAT 2023 में क्वेश्चन आया, because this synthesis of squalene it also occurs in the humans, biosynthesis of cholesterol we have seen, and उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। So arrange the following steps in the biosynthesis of cholesterol in a correct order, GPAT 2023 में क्वेश्चन आया। यहाँ पे भी स्टेप दिख रहे हैं। acetyl-CoA is converted to aceto-acetyl-CoA, इसमें और एक 2 कार्बन एटम ऐड होगा, aceto-acetyl-CoA। उसके बाद में बनेगा मेलोनिल, मेलनिक एसिड और मेलनिल कोए से मेलनिक एसिड बनेगा, इसको बोलेंगे मेलोनिल कोए या मेलनिक एसिड। उसके बाद में मेलनिक एसिड का बाद में फॉस्फोरिलेशन हो गए, बाद में आइसोप्रोपेनॉइड यूनिट बनेगा। उसके बाद में उससे जर्नल फॉस्फेट बनेंगे, जर्नल पायरोफॉस्फेट। उसके बाद में फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट बनेगा। और स्टेप्स यही याद रखो, acetyl कोए, मेलोनिक एसिड और मेलोनेट, देन जर्नल कोए, फिनाइल प्रोपेनॉइड, आइसोप्रोपेनॉइड, और बाद में जर्नल फॉस्फेट, फर्नेसिल फॉस्फेट, एंड लास्ट में स्क्वेलिन बनेगा। तो यही ऑप्शन निकाल है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा था। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? फर्स्ट acetyl कोए, देन मेलोनिक एसिड will be synthesized, after that IPP, isophenyl propanide, isopropyl propanide, and then जर्नल पायरोफॉस्फेट, देन फर्नेसिल पायरोफॉस्फेट, एंड देन लास्टली स्क्वेलिन। ये पाथवे जो है ना इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोग्नोसी में है, ये पाथवे आपको बायोकेमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स में है। नेक्स्ट होता है अमीनो एसिड पाथवे, अमीनो एसिड पाथवे। तो 20 अमीनो एसिड्स, यू नो दैट दे आर इन अ नेचर, दे आर नोन एज स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। यस और नो? कितने होते हैं अमीनो एसिड्स? सांगा वाला, हाउ मेनी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर? यस, एनीबडी फटाफट सांगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर? यस, आवाज येते का? आवाज येत आहे का? अनिकेत, सुबोध, यस, एनीबडी, हाउ मेनी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर? यस, झालं असेल तुम्हाला बायोकेमिस्ट्री। हे कम लेफ्ट होत आहे? आदित्य चौधरी लेफ्ट द मीटिंग, कशामुळे बाबा? सूरज कुमार झा लेफ्ट द मीटिंग, कशामुळे? माहित नाही। यस, एम आय ऑडिबल यू? हर्षाली, इथे सगळे चालले, झालं नाही लेक्चर, चालू आहे, पुढे जायचं आपल्याला। हे चालले का म्हणून नाही सगळे? मोहित जैन लेफ्ट मीटिंग। हाउ मेनी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर? 20. Okay, they are known as standard amino acid, but recently 20 first amino acid and 22nd amino acid has been identified. आपको मालूम है क्या 21st amino acid कौन सा होता है? Tell me the name of 21st amino acid. Anybody? Name of 21st amino acid. 20 amino acid क्या होते हैं? 20, they are nothing. Okay, 20 amino acids are nothing but the standard amino acids. 20 कितना होता है? 20 amino acids are the standard amino acids, but recently 21st amino acid is identified. Okay, anybody? What is the name? 22nd amino acid is also identified. What is the name? And 22nd, 21 का तो सेलेनोसिस्टीन करेक्ट है, सेलेनोसिस्टीन is the correct one, that is the 21st amino acid. Okay, what is the 22nd? ठीक है, लिख लो आप। 21st क्या है? सेलेनोसिस्टीन। 21st यहाँ पे लिख दो, 21st का है सेलेनोसिस्टीन। Selenocysteine is a 21st. 22nd is a, yes, anybody? Yes, pyrrolysine is a 22nd. So you have to remember this. These are the 21st, 22nd amino acids. Okay. And what is meant by amino acid? एक acid जो होते हैं amino acid, there is a amino acid, not a amino acid. एक 20 कार्बन मतलब, so out of 20 standard amino acids, so there is one known as amino acid. Yes, anybody?
इम्यूनो एसिड कौन सा होता है, इम्यूनो एसिड कौन सा है, ठीक है। अमीनो एसिड तो हो गए आपके 21 22 हो गए, उसमें सब में से एक ऐसा है कि जो इसको अपन बोलेंगे इम्यूनो एसिड, नॉट अमीनो, इम्यूनो। एनीबडी, कौन सा है 20 नंबर का अमीनो एसिड होता है, 20 नंबर कौन सा है, किसका है नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ 20 नंबर अमीनो एसिड, एनीबडी। या प्रोलिन इज नॉट अ अमीनो एसिड, इट इज अ इम्यूनो एसिड। प्रोलिन क्या होता है, इम्यूनो एसिड होता है, you have to remember, okay now. So the trans amino 20 amino acids are important for the synthesis of proteins in the plant, because amino acids are the they are the building block for proteins. So proteins are nothing but the polymer of amino acid, okay. So transamination reaction occurs along with the these amino acids, transamination reaction. Amino acid like alanine, glutamic acid, aspartic acid, amino transferase enzyme is will transfer the amino group. तो यहाँ पे दो एंजाइम्स एक्ट होंगे, ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, दीज आर द टू reactions that are very common in the amino acid metabolism. For example, alpha ketoglutamate acid plus ammonia NADPH, you will get a glutamic acid. Transfer of amino group to the ketoglutamate acid, alpha ketoglutamate acid, you will get a glutamic acid. The amino acids are divided in the different groups according to the amino acids can be differentiated into 5 different groups. कुठले ग्रुप आहे देखा, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आज याच्यावरती क्वेश्चन आलेला आहे. So amino acid groups, so first group is known as the glutamate family. पहिला आहे that is a glutamate family, and in that alpha ketoglutarate is the precursor. So in the glutamate family, how many number of amino acids are there? So glutamate is there, glutamine is there, arginine is there, and proline is there. So all these amino acids like glutamate, glutamine, proline, arginine, all they are synthesized from alpha ketoglutarate. Now second होगा आपका aspartate family. So in that oxaloacetate is the biosynthetic precursor. तो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा था. So for the aspartate or aspartate like amino acids or aspartate family, amino acid containing amino acid which are there in the aspartate family. So what is the biosynthetic precursor? Biosynthetic precursor for aspartate is nothing but the oxaloacetate. The main example of amino acid present in this group, they are aspargine, isoleucine, threonine, aspartate, and methionine. Another example is their alanine, valine, and leucine group. Another group. The amino acids of serine and glycine group, there is also another group. So there are 5 groups aromatic amino acids. उसमें क्या रहेगा आपका aromatic amino acids, उसमें आपका you know that अपन ने देखा है 3-phosphoglycerate phosphoenol pyruvate is the starting material and erythrose 4-phosphate is the starting material, because all both 3-phosphoglycerate phosphoenol pyruvate and erythrose 4-phosphate that is the starting material for Shikimic acid पाते हैं, उसमें ही बनता है tyrosine phenylalanine tryptophan. So amino acids are grouped into 5. So those glutamate family includes glutamate, arginine, glutamine, and proline. Okay, they are synthesized from alpha ketoglutarate. Aspartate family में आपका आएगा aspargine, isoleucine, threonine, aspartate, methionine. उसके लिए biosynthetic precursor कौन है? Precursor is oxaloacetate. ठीक है. Another group होता है, another group is there alanine, valine, and leucine. Group number 4 serine and glycine. Right? Group number 5 aromatic amino acids. The amino acids are synthesized from intermediate of the pentose phosphate pathway, glycolysis and citric acid cycle. इसमें जो होता है ना इंटरमीडिएट उससे बनता है. Around 10 amino acids are synthesized few through enzymatic step from the precursor, but rest of aromatic amino acids are complex in synthesis. The 10 amino acid का synthesis बहुत easy होता है, बाकी का थोड़ा सा complicated होता है. So from the glucose molecule you are going to get erythrose 4-phosphate. From erythrose 4-phosphate, histidine, tyrosine, and phenylalanine, they are synthesized by Shikimic acid pathway. From glucose, pyruvate is there. From pyruvate, these amino acids like valine, leucine, serine, cysteine, alanine, tryptophan, they are synthesized. From pyruvate, alpha ketoglutarate is the synthesized. From alpha ketoglutarate, glutamate, proline,
ग्लूटामाइन, ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से बनेगा सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से बनेगा अर्जिनिन. Then from alpha ketoglutarate only homoserine and methionine are synthesized. From same threonine is synthesized. Threonine से बनेगा isoleucine और अल्फा ग्लूटारेट से ही एस्पार्टेट बनता है. एस्पार्टेट से एस्पार्जिन बनेगा और अल्फा ग्लूटारेट प्लस डाई अमीनो palmitate लाइसिन बनेगा. तो जनरल स्कीम फॉर अमीनो एसिड फॉर्मेशन इन द प्लांट्स. फॉर्मेशन ऑफ ऑर्निथिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड अर्जिनिन. अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड, बाद में ग्लूटामिक एसिड बनेगा, बाद में ग्लूटामाइन बनेगा, ग्लूटामिक एसिड का ग्लूटामिक सेमी एल्डिहाइड बनेगा, बाद में ऑर्निथिन, बाद में अर्जिनिन. 5 पाइरुलिन कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा प्रोलिन और बाद में हाइड्रोक्सीप्रोलिन. ऐसे अमीनो एसिड्स प्लांट्स में बनते हैं. तो मेवोलिनेट पाथवे, एस्टेट मेवोलिनेट पाथवे ये अपने ऑलरेडी देखा है. तो आज में कोई स्पेलिंग बनने के लिए लास्ट ईयर जीपैट 2023 में एक क्वेश्चन आया था बॉस. आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ओपीएम अल्कोलाइड्स. किसी ने पेपर देखा है आपने पेपर? यस एनीबॉडी? हाँ, पेपर देखना चाहिए. पेपर इंपॉर्टेंट है. पेपर को एनालाइज करना चाहिए. क्वेश्चन आया था देखो, मॉर्फिन, कोडीन और एक कंपाउंड का नाम था. तो सबसे पहले कौन सिंथेसिस होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया. So that's why I have included these pathways in presentation. तो पहले ये pathways नहीं थे, डिस्कस किए थे लेकिन शॉर्ट में डिस्कस किए थे. So for example biosynthesis of atropine, important क्या क्या है उतना लिखिए. Biosynthesis of atropine. So atropine or tropane alkaloids. Atropine belongs to tropane alkaloids. So atropine, iosine, cocaine also. So they are tropane. So they are synthesized from ornithine amino acid. ऑर्निथिन अमीनो एसिड. ठीक है, उसके बनेगा बाद में एन मिथाइल ऑर्निथिन. ठीक है, उसके बाद में बनता है उसका 4 मिथाइल अमीनो ब्यूटानॉल. 4 मिथाइल अमीनो ब्यूटानॉल. उसके बाद में एन मिथाइल पायरोलिनियम सॉल्ट बनेगा. बाद में बनेगा उसका प्रोपिनोन. बाद में बनेगा प्रोपेन. ये याद रखो, ऑर्निथिन बाद प्रोपिनोन प्रोपेन. तो ऑर्निथिन प्रोपिनोन प्रोपेन, इसको भी हाइड्रीन एक याद रखो. ऑर्निथिन से बनेगा आपको 4 अमीनो ब्यूटानॉल, उसके बाद में हाइड्रीन, उसके बाद में प्रोपिनोन, उसके बाद में प्रोपिन और ट्रोपिन है ना. ट्रोपिन जो होता है ये इंपॉर्टेंट है. ट्रोपिन ये इट इज अ प्रिकर्सर फॉर एट्रोपिन. तो ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड. ट्रोपिक एसिड का से आएगा ट्रोपिक एसिड. तो इस ट्रोपिक एसिड प्लस ट्रोपिन आपको देगा हायोसाइनिन और एट्रोपिन. बट ये ट्रोपिक एसिड कहाँ से आएगा, दैट इज फ्रॉम फिनाइलएलानिन. तो फिनाइल पायरुविक एसिड, उसके बाद में ट्रोपिक एसिड प्लस ट्रोपिन एट्रोपिन. तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि अरेंज द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इन अ करेक्ट ऑर्डर इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एट्रोपिन. एट्रोपिन के बायोसिंथेसिस में कौन से इंटरमीडिएट देखो. सबसे पहले अमीनो एसिड होता है, तो ऑर्निथिन. ठीक है, दैट इज द प्रिकर्सर. उसके बाद में बनेगा 4 मिथाइल ब्यूटानॉल. उसके बाद में हाइड्रीन बनेगा. उसके बाद में ट्रोपिनोन बनेगा. उसके बाद में ट्रोपिन बनेगा. ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड जब ये कंडेंस होंगे तो बनेगा एट्रोपिन. ठीक है, तो आपको ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस याद नहीं रखना है. आपको सिर्फ क्या रखना है, बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर को है. बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑर्निथिन. ऑर्निथिन के बाद में क्या बनता है, ये 4 अमीनो ब्यूटानॉल. ये भी छोड़ो, ये तो याद रखो, हाइड्रीन बनेगा. हाइड्रीन के बाद में क्या बनेगा, ट्रोपिनोन के बाद में ट्रोपिन प्लस ट्रोपिक एसिड बनेगा, बाद में एट्रोपिन. तो सीक्वेंस याद रखो. पूरा पाथवे लिखने के लिए नहीं आएगा. तो पाथवे लिखने के लिए कहाँ पे आता है, मास्टर इन इफ यू आर डूइंग मास्टर्स इन द फार्माकोग्नोसी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये सब पाथवे हमने लिखे एग्जाम में. तो उसके बाद में बायोसिंथेसिस ऑफ इपेड्रिन. तो इपेड्रिन इज बायोसिंथेसिस फ्रॉम फिनाइलएलानिन अमीनो एसिड. तो फिनाइलएलानिन से बनेगा पायरुविक एसिड. उसके बाद में बनेगा आपका कैथिनोन से बनेगा आपका नॉरइफेड्रिन और बाद में इफेड्रिन बनेगा. कैथिनोन से ही आपका आइसोमर आलेख होगा, बनेगा नॉरसुडोइफेड्रिन. कैथिन नॉरसुडोइफेड्रिन को कैथिन बोलते हैं, बाद में सुडोइफेड्रिन. और ये इफेड्रिन और सुडोइफेड्रिन, इसका स्ट्रक्चर आया था जीपैट 2022 में. यू कैन गो एंड चेक द पेपर. इसका स्ट्रक्चर पूछा था जीपैट 2022 में. ऑप्शन में ये भी था.
एक स्ट्रक्चर दिया था आपको, ऑप्शन यही सेम स्ट्रक्चर था, तो ऑप्शन में था एपेड्रिन, सुडोएपेड्रिन, नॉरएपेड्रिन, तो करेक्ट आंसर वाज सुडोएपेड्रिन, सॉरी करेक्ट आंसर वाज एपेड्रिन। ठीक है, तो याद रखना है, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। एपेड्रिन के बारे में दिस ईयर आई थिंक जीपैट 2023 में भी क्वेश्चन आया है एपेड्रिन। क्वेश्चन वाज लाइक दैट, so one of the following drug, actually I will discuss that part in when I will take anti-hypertension drug, है ना। क्वेश्चन ये था, दो क्वेश्चन थे इम्यूनिटी के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये था कि which of the following drug will produce mydriasis without cyclopegia, mydriasis without cyclopegia। आप चेक कर सकते हो पेपर जीपैट 2023, mydriasis without cyclopegia, उसका आंसर था यूपेटी। बहुत सारे लोगों ने एट्रोपिन लिख दिया, एट्रोपिन वाज एट्रोपिन प्रोड्यूसेस mydriasis with cyclopegia, mydriasis and cyclopegia they are caused by atropine. When we will discuss parasympathetic lytic drug, at that time I will explain this cyclopegia क्या होता है। मैं बस आपको यहाँ पे याद रखना है। So phenylalanine is the first step, after that pyruvic acid is the second step, after that third step क्या है, कैथीनोन, कैथीनोन, कैथीनोन से नॉरएपिड्रिन बनेगा, नॉरएपिड्रिन से एपिड्रिन बनेगा, एपिड्रिन से ही बनेगा नॉरएपिड्रिन, इससे एपिड्रिन बनेगा। now next is nothing but नेक्स्ट इज नथिंग बट बायोसिंथेसिस ऑफ मॉर्फिन। देखो जीपैट 2023 में ये क्वेश्चन है। तो पहले तो बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर कौन है, टायरोसिन, टायरोसिन इज द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर। ओके, टायरोसिन पहले बनेगा, टायरोसिन इज अ अमीनो एसिड, फ्रॉम दैट टायरोसिन यू आर गोइंग टू गेट, ओके, you are going to get this 3,4-dihydroethylamine and 3,4-dihydrophenyl pyruvic acid. These two molecules they will combine together, they will condense to form a nor laudano or nor laudanosulin carboxylic acid. Then nor laudanosulin ये बने, बाद में रेटिकुलिन बने, यहाँ पे रेटिकुलिन याद रखो। तो टायरोसिन, बाद में फिनाइल pyruvic acid, dihydrophenyl pyruvic acid, dihydrophenyl ethylamine, and then reticulin, then salutardine, salutardanol, then porinone, then porinone, sorry porinone, पोरिनोन से बाद में पोरिन और लास्ट में मॉर्फिन। ऑप्शन में यही ऑप्शन थे, टायरोसिन एक ऑप्शन था, फिर उसके बाद में ये सल्यूटारिन दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था पोरिनोन, पोरिनोन तीसरा ऑप्शन था, और लास्ट में था एक मॉर्फिन। ऐसे दिए थे, बोला था फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉर्फिन बायोसिंथेसिस, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ मॉर्फिन और ओपियम मॉलिक्यूल। तो याद रखना है, बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है टायरोसिन, टायरोसिन से फिनाइल इथाइल अमाइन बनेगा एंड फिनाइल फिनाइल पायरुविक एसिड बनेगा, डायहाइड्रोफिनाइल पायरुविक एसिड, डायहाइड्रोफिनाइल एथाइलामाइन। इसके बाद में कंडेंसेशन हो गया, ये बनेगा आपका रेटिकुलिन, रेटिकुलिन से बनता है सलूटेरिन, सलूटेरिन, बाद में पोरिनोन, पोरिनोन, पोरिनोन से बनेगा बाद में पोरिन, पोरिन से बनेगा बाद में मॉर्फिन। Then utilization of radioactive isotope in the tracer technique, utilization of radioactive isotope in the tracer technique। tracer technique क्या होता है, ट्रेस करना, ट्रेस करते इसको करते हैं अपन कुछ particular way। So tracer technique is used for the study of secondary metabolism। So metabolism of in the plant that can be studied by metabolism in the plant that is studied by tracer technique। So radio labeled compound is introduced into the plant and the metabolic pathway of plant is analyzed, it is studied। So in that is known as a radio, that is known as a tracer technique। ट्रेस करना है, ठीक है। ट्रेस क्या करते हैं, ट्रेस आपने आपका बंदा भेज दिया इसमें, है ना, जो स्पाई वाले होते हैं, ये रॉ एजेंसी है, रॉ एजेंसी ने क्या किया, एक स्पाई को भेज दिया कहाँ पे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में भेज दिया। तो वो स्पाई को ट्रेस करना इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक गया, रावलपिंडी में गया या फिर मुजफ्फराबाद में गया या फिर कहाँ गया वो, तो कब ट्रेस कर सकते हो, स्पाई के अंदर वहाँ पे कुछ ना कुछ जीपीएस का डिवाइस डाल दिया तभी ट्रेस कर सकते हो। तो प्लांट में भी आपका मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, ये ट्रेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लेबल्ड भेजना पड़ेगा। तो लेबल्ड क्या होगा, रेडियो
radioactive isotope. So radioactive carbon, hydrogen, they are mostly used in the biological investigation. And other compound like sulfur, radioactive sulfur, phosphorus, radioactive alkali and alkaline are the metals. They are also used but rarely, but they are used for specific purpose. These compounds enable the compound. These these compounds enables individual to study the metabolism in the living organism and study of proteins, study of alkaloids, amino acids. But so proteins, alkaloid, amino acid का study of proteins or amino acids and alkaloids. So it can be done by radio labeled nitrogen. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Radio labeled nitrogen can be used in the study of biosynthetic pathway of alkaloids. And nitrogen will give more specific information regarding this protein amino acid and alkaloids in comparison with the labeled carbon. Radio labeled carbon is the comparison में कम information. Now availability of nitrogen isotope is stable and necessitates the utilization or use of this mass spectrometer for their use in the tracer technique. The naturally occurring carbon isotopes are also stable. उनका मास नंबर होता है कार्बन 12, कार्बन 13 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 13 का आइसोटोप, कार्बन 12 is stable. They are the most abundant. In other radioactive isotopes, carbon having mass number 10, 11, 14, कार्बन 10 भी होता है, कार्बन 11 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है. They are varied half life. जैसे कार्बन 10 का half life होता है 8.8 सेकंड, कार्बन 11 का half life होता है 20 मिनट, कार्बन 40 का half life होता है more than 5000 years. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Carbon 10 and 11 are useful in the biological research. Carbon 10, 11 radioisotopes are useful in the biological research. So use of organic compound with the pre-labeled carbon leads to, ठीक है, तो ये pre-labeled carbon जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है प्लांट में. कैसे? जैसे आप खाना खाते हो, खाना लगता है आपको, वैसे प्लांट को भी लगता है. फर्टिलाइजर्स लगते हैं, उनको वाटर लगता है, उनको फर्टिलाइजर लगता है, ह्यूमस लगता है. तो इन दैट फर्टिलाइजर, इन दैट वाटर, तो वाटर क्या है? H2O. H2O के बजाय H3O डाल दो. ट्रीटेड वाटर, ड्यूटेरिएटेड वाटर. वो अगर वाटर को फीड किया प्लांट को, तो वो वाटर में क्या रहेगा? रेडियोलेबल हाइड्रोजन. वो जहाँ जहाँ पे वो वाटर का यूटिलाइजेशन करेगा, वो आप पे आपको समझ में आएगा. Synthesis of from organic compound. Pre-labeled carbon leads to the compound synthesis from inorganic carbon compound, which is produced in the roots and not previously commercially utilized. तो ये सिंपल लैंग्वेज में बोल लेता तो क्या है? रेडियोएक्टिव कंपाउंड आपको यूज करना है टू स्टडी द मेटाबॉलिक पाथवे इन द प्लांट नोन एज अ ट्रेसर टेक्निक. इसमें कौन से हो गए? तो कंपाउंड कौन से आइटम यूज कर सकते हो? ऑब्वियसली यहाँ पे आप फास्फोरस को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं. यहाँ पे आप रेडियम वगैरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड अगर होगा तो फास्फोरस रहता है, इसके बाद में कुछ नहीं होता. तो यही रेडियोलेबल कंपाउंड यूज करना पड़ेगा. इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड will be more pure because of the radioactive requirement for this technique. टेस्ट टेक्निक के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड. पहले तो आपको जो आइसोटोप है वो लेबल करना पड़ेगा. तो लेबल कंपाउंड produced by growing chlorella in the atmosphere, carbon dioxide, carbon 14 containing carbon dioxide. तो कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, नॉर्मली कार्बन 12 होता है CO2, है ना. उसमें अगर कार्बन 14 डाल दिया तो दैट विल प्रोड्यूस अ ग्रोविंग कलोरा, सर्टेन काइंड ऑफ कलर प्रोड्यूस करता है. इसमें H3 मतलब होता है ट्रिटियम लेबल्ड कंपाउंड्स आर कमर्शियली अवेलेबल. ट्रिटियम लेबलिंग इज इफेक्टेड बाय, मतलब लेबलिंग कैसे करते हैं? ट्रिटियम कैसा? It is produced by hydrogen by catalytic exchange in the aqueous medium by hydrogenation of unsaturated compound like tritium gas. Tritium is a pure beta emitter. Tritium जो है ना, वो एक रे एमिट करता है, बीटा रे, एंड आप उससे ट्रेस कर सकते हो कहाँ है, रेज का अमाउंट कितना है. यू कैन एनालाइज द emitted rays by this
radioactive isotopes when they are present in the plant. So you have to check the radioactivity of the plant. Okay. So H3 tritium is available commercially. Tritium labeling is done by, or it is affected by catalyzing the exchanging of aqueous media by hydrogenation of unsaturated compound with the tritium gas. Tritium is a pure beta ray emitter by and low intensity. Its radiation energy is lower than rays emitted by carbon 14. तो ये तो पहला स्टेप हो गया. Steps in the test technique. पहला क्या है? Preparation of labeled radio isotope. Second क्या है? Introduction of that labeled isotope into plant. उसके लिए process होता है. So you have to take a precaution while introduction. Okay, precaution. Okay, the precursor or radioactive precursor, for example, in the form of water. से वाटर लगता है प्लांट को तो H2O होता है नॉर्मली H3O डालता है वाटर क्या H3O सो ड्यूटेरिएटेड वाटर और ट्रिटिएटेड वाटर तो नॉर्मल वाटर नहीं देना है प्लांट को ट्रिटिएटेड वाटर देना है क्यों कि आप उसका रेडियो एक्टिविटी चेक कर सकते हो आप स्टडी कर सकते हो प्लांट का मेटाबॉलिज्म सो प्रिकॉशंस द रेडियोएक्टिव प्रिकॉशंस शुड रिएक्ट एट अ नेसेसरी साइट इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट at experiment time should synthesize the compound under investigation. मतलब आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि हाउ देयर इज अ बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोपेन अल्कोहल तो आपने क्या किया रेडियो लेबल नाइट्रोजन डाल दिया प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ यूरिया लगता है ना फर्टिलाइजर यूरिया में रेडियो लेबल नाइट्रोजन डाल दिया लेकिन वो कंपाउंड अल्कोहलाइड सिंथेसाइज नहीं कर रहा है वो प्लांट अल्कोहलाइड सिंथेसाइज नहीं कर रहा है तो क्या यूज उसका सो प्लांट एट अ एक्सपेरिमेंटल टाइम should synthesize the compound under investigation. How to introduce this radio-labeled compound in the plant? There are three techniques: root feeding, steam feeding, and direct injection. Root feeding मतलब क्या है? Plant which root are biosynthetic sites. जैसे होता है roots किस में? The plant in which roots are biosynthetic. तो किसी के plant का देखो all fair roots are important. तो ये वहाँ पे alkaloid मिल गए ना roots, tobacco roots. So example tobacco the plant is hydrophonically cultivated hydrophonically मतलब क्या hydrophonically मतलब controlled water उसमें देना है hydrophonically cultivated to avoid the microbial contamination और वो जो water रहेगा उसमें renewable compound steam feeding substrate can be administered through the cut end of steam immersed in the solution है ना रेडियो लेबल्ड सॉल्यूशन है उसमें स्टीम कट करो उसको डालो तो उसको एड अप कर ले डायरेक्ट इंजेक्शन सुटेबल फॉर प्लांट विद हॉलो स्टीम अम्बिलिफेरस प्लांट एंड ओपियम सो डायरेक्ट इंजेक्शन उसमें डायरेक्टली जो स्टीम होता है जिसमें हॉलो स्टीम बीच में क्या है एम्प्टी स्पेस है उसमें डायरेक्ट इंजेक्ट करना है रेडिएबल कंपाउंड और उसके बाद में आता है आपका इनफिल्ट्रेशन सुटेबल फॉर इनफिल्ट्रेशन मेथड suitable for plant rooted in the soil or without disturbing the roots. Weak feeding. Rooting method is there. So a small amount of material is available for this method. This method can be used in the conjunction with the vacuum infiltration to remove the gases. The spray technique. First technique है आपको spray technique. Compound has been absorbed after being sprayed. मतलब आप अगर in the form of spray कर रहे हो आप radio label compound. The compound should be absorbed in the leaves. Okay. Then isolation करना है, then extraction करना है. Detection of compound by using radio labeled. Detection of radio labeled compound by using as a Giger-Muller counter, liquid scintillation counter is there, gas ionization chamber is there, bursting Valentine counter is there, and you can also study these things by mass spectroscopy, NMR spectroscopy, autoradiography and X-ray chromatography. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था व्हाट डू यू मीन बाय नहीं इसके ऊपर नहीं पहले ये बोला है ऑलरेडी दैट इज नोन एज अ मार्कर कंपाउंड के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है इसमें वो ऑलरेडी मैंने बोला है मार्कर कंपाउंड इज अ कंपाउंड व्हिच हैज अ known purity